Hello guys, welcome back to Lolland Vlog. So today I'm gonna go somewhere very special because since I was so busy shifting and all because I moved out of my hostel, so थोड़ा 2-3 दिन ही हुआ है अपना घर में वापस आके. So I left my college since graduation हो चुका है हम लोगों का. So I'm very like excited. At the same time I was very sad because I was leaving my college, and in the process I could not film any vlog. So this is my you know first vlog after graduation. So today's vlog gonna be very special since I'm going to see my garden, or we can say, I don't know what to say it. It's not garden. At the same time it's not a farm. What to say? I don't know. I think it's a garden only, but it's far from my house. So it is in my hometown. So I came back to Alo. So yeah, let's go see my farm, or I don't know, garden. So I hope you will enjoy it, and I'm gonna pluck some like vegetables. So it will be like wild vegetables and all. So I hope you will like this video. Bye bye. Bye guys, we're gonna go now. So let's see garden में क्या क्या है. So here's my father. आप देखो ना इधर. Bye bye. So guys, we have finally reached our garden. So let's go inside. Let's go inside. Oh my god. It looked more like a jungle now. Guys, finally we have come to this bamboo house or farmhouse, and we call it Nakum in our language. So my father built it by himself all alone. Thanks to father. And this bamboo house is purely bamboo, so you can see now. हेलो गाइस. सो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि ये बैम्बू हाउस कैसे बना है, एंड अंदर में कैसा है, बाहर कैसा है. आप लोग देख चुके होंगे बाहर से कैसा दिख रहा था. सो ये बैम्बू हाउस को मेरा पापा बनाया है, माय फादर. पूरा अपना मेहनत से बना है, खुद से. एंड इट इज़ ऑल बैम्बू, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जस्ट प्योर बैम्बू हाउस. सो लेट्स सी इनसाइड कि क्या क्या है. सो या लोकल स्टाइल, एकदम लोकल स्टाइल में बनाया है. सो यू कैन सी एज वी एंटर. सो सबसे पहले आपको शायद ये चूल्हा दिख रहा होगा. सो ये जो होता है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है, स्पेशली अरुणाचल में गालो हाउस लोग में ये ऐसे मिट्टी से बनाता है. ये जो आई डोंट नो, हम इसे मिराम कहते हैं. आई डोंट नो इन इंग्लिश और में हिंदी में क्या कहते हैं. एंड दिस इज द लाइक चूल्हा, यू कैन सी. सो यहाँ पे आग वाग जलाएगा. सो रोस्टिंग वोस्टिंग सब कुछ करेगा. सो आज भी हम लोग रोस्टिंग करके खाने वाला है. सो आई एम सो एक्साइटेड. सो यहाँ पे है स्टोरेज करने के लिए जगह है. एंड देन these are stools and like chairs and all. पूरा लोकल स्टाइल है ये. और यहाँ पे आप देख सकते हैं पापा ने यहाँ पे स्विच भी लगाया हुआ है मोबाइल के लिए, और यहाँ पे चार्ज रखने के लिए. इट्स अ स्टोरेज प्लेस टू कीप योर फोन एंड ऑल. सो इट इज ऑल सेल्फ मेड बाय माय फादर, जो अभी हमको वीडियो ले रहा है, कैमरा मैन. थैंक यू सो मच अबो. And you can see these are also some storage places for keeping our towels and clothes. So you can see here also it's a bed. जो होते हैं ना बिहार में, आप लोग बहुत फेमस होगा, देखता होगा बाहर पे ऐसे सोता है ना छत वगैरह में, वो जो टीवी में देखा था वो वाला. ये जो इट्स वेरी कंफर्टेबल, एंड थक जाते तो आप यहाँ पे सो सकते हैं. एंड देन दिस इज द ग्रास कटर.
अभी तो यूज़ नहीं होके बहुत समय से रखा हुआ है सिंस इट्स वेरी हॉट एंड ग्रास लोग काटने के लिए इतना सारा है। सो बाद में करेगा होगा अब वो लोग। एंड I forgot to like show you these, you know, these are bananas. ये अभी सड़ने वाला है। हम लोग का गार्डन का ही है। It's so much and there's plenty of it there. I'll show you later. I'm thinking to like make a wine, you know, a banana wine out of this since ये यहाँ पे सड़ने वाला है. So let's see. Bye bye. Guys, now let's see क्या क्या है पापा का गार्डन में. So guys, let's have a tour of my garden. Firstly, let's see banana plantation का area. So you can see कि यहाँ पे already bananas बहुत सारा निकल चुका है. And it is so mesmerizing to see क्योंकि अब वो इतना मेहनत करके डाला था इन सबको. So अच्छा लग रहा है देख के कितना अच्छी तरह उठ रहा है. And बहुत सारा you know like पक भी चुका था. We had it already. So बहुत टेस्टी है हमारा गार्डन का. सो या ऑर्गेनिक सब चीज़. गाइस आगे की तरफ भी बहुत सारा है. नाउ लेट्स सी देम. Now let's move on to another section of my father's farm. Hello guys, so you can see these are the guava plants that we have planted. It is spread it over there and some places around the corner. So ये जो है ऑनलाइन से मंगाया था पापा. सो यू नो यहाँ का ऐसा होता है कि गुआवा लोग जब पक जाता है ना तब जो मतलब सड़ जाता है ना, तो इसीलिए अब वो जो इसको ऑनलाइन से लिया है जल्दी जल्दी यू नो लाइक जो जल्दी नहीं सड़ता है वो वाला ब्रीड. सो इट्स यू नो लाइक आई थिंक मिक्स ब्रीड. सो ये वाला अभी से शुरू हो रहा है निकलने के लिए. सो लेट्स सी क्या होता है. अमेज़न से मंगाया था ये वाला प्लांट को. सो अभी तो थोड़ा बड़ा हो चुका है. आगे कुछ सालों में कैसा होगा आई डोंट नो एंड आई विल शो यू यहाँ में अच्छा सा होगा कि नहीं होगा. सो या और ये एरिया है मम्मी का. मकाई लगाया है मम्मी ने यहाँ पे बहुत सारा है. एंड आई एम सो एक्साइटेड ये अभी बड़ा होने के बाद खाने के लिए. सो दीज आर मेज एरिया. और ये एरिया है लौकी का. सो ये ऑलरेडी 2 लौकी उग चुका है. सो मम्मी शायद इसको तोड़ेगा बड़ा होने के बाद. गाइस ये जो क्रीपर्स जैसे देख रहे हो दिस इज़ कॉल्ड विंग्ड यम और कॉमनली वी कॉल इट इंगन इन आवर लैंग्वेज. Guys, let's see this tapioca plant. So it will look like this on maturation. In Africa, it is very famous to make fufu and all. So I'm gonna make it after it get mature. Guys, now let's see नींबू. So अब लोग बहुत सारा लगा है लाइन लाइन. So अभी ये छोटा छोटा वाला है, आगे बहुत बड़ा बड़ा वाला भी होगा. Now let's see. Guys, now let's pluck some lemons. So आप लोग देखो कि कितना बड़ा बड़ा वाला है ऑर्गेनिक वाला नींबू है पापा का. Ta-da!
गाइस ये है गोल वाला नींबू, चलो आओ तोड़ते हैं गोल वाला भी। As you can see, it is so much in amount, so we cannot consume it by ourselves. So I think we have to like sell it halfway. So I'm so excited. आज मम्मी बहुत खुश होगा देख के इतना सारा। These are Phoebe Coperiana. So these are called husser in our language. So इसको खाने के बाद नींद नींद जैसा लगता है। ये बहुत ही इसका बेरीज जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंस होता है, बहुत मतलब टेस्टी होता है। इसका गंध सुन के ऐसा लगता है खाने का मन करता है। सो दिस इज़ माई फेवरेट, ये हस्सर जो होता है। इट्स टाइम फॉर लंच, बहुत भूख लग रहा है हमको अभी। गाइस फाइनली हमारा रोस्टेड चिकन रेडी है। अब मैं खाने वाली हूँ राइस के साथ। आई एम सो एक्साइटेड। गाइस मेरा लंच हो चुका है एंड देन दिस आप जो देख रहे हो ना ये ग्रास जैसा, इट इज़ कॉल्ड तामी इन आवर लैंग्वेज एंड इट हैज़ सेवरल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो वी कैन मेक बियर आउट ऑफ इट्स ग्रेन। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल। दीज आर बिटर एग प्लांट, बहुत ही छोटा छोटा होता है। इसे हम इंग्लिश में लिकॉक भी कहते हैं एंड गालो में बाका कहते हैं हम इसे। अगेन ये है अनार। सो ये वाला जो ब्रीड है इसको हम लोगों ने अमेज़ोन से लिया था। आई स्टिल रिमेंबर, अभी तो बहुत छोटा है स्टिल। और ये कुछ पपीते के पेड़ जो अबो लगाया था नाकुम का सामने। सो अभी तो बहुत छोटा है ये लोग। गाइस अरुणाचल में ये बहुत ही फेमस है कुछ पता के नाम से। एंड आई रिमेंबर लास्ट टाइम मेरा कॉलेज में आई वाज इन द टीम कॉल्ड कुछ पता और हम लोग विनर था वो साल का। इट इज़ कॉल्ड कोकोयाम प्लांट इन इंग्लिश। गाइस ये है ओइग, इट्स अ वाइल्ड वेजिटेबल्स वेरी फेमस in Galo community, especially in अरुणाचल प्रदेश आलो। सो चलो आज के लिए डिनर के लिए तोड़ते हैं, घर ले जाएंगे। एक Guys, we have finally come to the end of my father's garden. So ये बैम्बूस है जिनको अबो और अन्ना ने लगाया था। ये पूरा बाउंड्री है हमारा। सो इट एक्ट लाइक अ वॉल। अच्छा ही है। एंड देन समटाइम अबो अन्ना लोग यहाँ से इको भी बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड बैम्बू शूट in English. Thank you so much for watching guys. If you like this video then please share, subscribe and like.